India is not a very concentrated story in Bombay, Delhi, Bangalore only. It is बिल्कुल। actually very widespread. एक तो क्या हो जाता है, I think wealth is essential for financial security, all of that. काफ़ी कुछ अभी एक नया ट्रेंड आ रहा है कि लोग ये वेल्थ को इसमें फैमिली ऑफिस बना देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. वो भी अच्छा है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर अदर्स. बट आई ऑल्सो फील, एंड वो भी काफ़ी हो रहा है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 में बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है. तो उनके उधर वेल्थ हुआ है, बट वहाँ पे वो लोग दे आर वांटिंग टू बिल्ड बिजनेसेस, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे आर, उनका एस्पिरेशंस बहुत है. तो आई थिंक अगर आपके पास वेल्थ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बिकॉज वही वेल्थ can give you financial security but can also allow you to take risks and opportunities and build businesses. So one of the things that I always recommend कि आपका wealth है, you should keep the financial security part, but you should also invest in building things, building businesses, building institutions, building organizations. सिर्फ earning 11-12% in the market is only one part of it. जो जैसे मैंने कहा, saving is only one part, investing is another part. In investing also there are two kinds of investing. One is pure financial investing, and one is also investing in building businesses, taking risk. And we need a lot of that also. So जैसे आपने कहा, entrepreneurs है, startups है, they are taking risks, they are building, which is also a very good thing. और वो इंडिया में लास्ट 5-10 साल में अच्छा unleash हुआ है. A lot of this I'm seeing is coming from tier 2, tier 3, tier 4 cities, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, और अल्टीमेटली वो लोग आ जाते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जाते हैं, बट स्टार्ट वहाँ से होता है. तो व्हेन आई ट्रैवल, एंड आई ट्रैवल अ लॉट इन इंडिया, आई गो टू लॉट ऑफ स्मॉलर टाउन्स. सो यू गो टू भावनगर, यू गो टू इंदौर, यू गो टू भोपाल, यू गो टू कानपुर, यू गो टू बरोडा, सूरत. ये सब सिटीज़ में वेल्थ क्रिएट भी हुई है, लेकिन वो वेल्थ से उनको कुछ खड़ना भी है, कुछ दे वांट टू बिल्ड समथिंग, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट स्टोरी ऑफ इंडिया. India is not a very concentrated story in Bombay, Delhi, Bangalore only. It is actually very widespread, and this actually augurs very well for India. India की जो future है, I mean, in a relative way, if you say cricket में ये हुआ था, if you go back 40-50 years ago, all cricketers came from Bombay, Delhi, Chennai. बिल्कुल. Gavaskar, छोटे शहरों से भी cricketers आ रहे हैं. Around Kapil Dev in 80s came from Haryana, Chandigarh, which was a relatively smaller town. बिल्कुल. But after that we had MS Dhoni from Ranchi and all that. And as I think the quality of our cricket has improved so dramatically, as people from all India have got the ability and the opportunity to participate in that. I think the same thing is happening in business. Business is no longer about Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta, Chennai. अहमदाबाद में भी है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, सूरत में भी है, भावनगर में भी है, कानपुर में है. तो अभी ये जो व्हाट आई कॉल द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हो रही है, वो भी इसी के कारण हो रही है, क्योंकि लोगों के पास वेल्थ भी है, एक्सेस टू वेल्थ भी है. आज कोई आदमी कानपुर में है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग एंड फाइंड इन्वेस्टर्स, ही विल फाइंड देम इन कानपुर आल्सो, एटलीस्ट फॉर द एंजल फर्स्ट राउंड एंड ऑल. ही डजंट हैव टू कम टू बॉम्बे. So ये बहुत अच्छा हुआ इंडिया में. I think this truly democratization of opportunity, wealth creation, but I also say that we still need to build a lot. We need to invest a lot into real businesses also, not just invest in